compromise between reactionary parties and the progressive parties. So now we are in the settled country. So now the situation came for us how we can contribute share solidarity for India's democratic movement also. We are sorry with Palestine people, Palestine Congress, Palestine friends. हम लोग एक आपस में दूसरे को साथ देकर हम लोग जी रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हमको ये नहीं कि हमको प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखना है और फिर सबमिट करना है, ये सब नहीं है। How you yourself see the question of funded NGO? कुछ लोग मुझे जानते हैं, सड़क का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ रोड। The degrowth hormone একটি মিথ্যা। So now we are in the settled country. The compromise between reactionary parties and the progressive parties. So present, the government is headed by the coalition of Communist Party of Nepal, Maoist, and the Nepali Congress and the Janta Samajwadi Party, and there are other political parties. So far left, far right, and in between. That's the kind of state politics is going on. And beside that, from the ground, like we are in the ground, it's right. It's really nice if we talk about the archaeology of the World Social Forum 2024. Behind us, there are lots of expensive, funded people are going on talking about another war, and next to us there is a Palestine tent, and some program is conflicting. So we are sorry with Palestine people, Palestine Congress, Palestine friends. उषा तितिक्सु, अभी मैं काठमांडू में हूँ और मैं बहुत साल से सामाजिक काम करती हूँ, स्वयं सेवक। और फिर मैंने बहुत साल फोटो पत्रकारिता का काम किया, तो मेरा एक परिचय फोटो पत्रकार, और मैं एक्टिविस्ट, मेरा परिचय है ये भी। मैं साइकिलिस्ट हूँ, और फिर मैं बहुत सारी फर्क जो विषय है उसमें जुड़कर मैं काम कर रही हूँ। और मेरा काम है कि एक तो काम को कैसे सहजीकरण करना, फैसिलिटेट करना, दूसरा ये है कि अभियान और आंदोलन को कैसे ले जाना, उसका डिजाइनिंग का काम, कंसेप्चुअल काम। तो ये सब सारा काम जो है मेरा वॉलंटियरी कंट्रीब्यूशन है। तो मैं खुद अपने को भिखारी भी कहती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारा जो जमीनी हालत है वो बहुत बुरा है। तो हम लोग एक आपस में दूसरे को साथ देकर हम लोग जी रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हमको ये नहीं कि हमको प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखना है और फिर सबमिट करना है, ये सब नहीं है। तो मेरा एक दूसरा भी काम का एक क्षेत्र है, वो है मेरा विजुअल एंथ्रोपोलॉजी, है ना। तो वो मैं ज़्यादातर उसको लेकर मैं बात नहीं करती हूँ। तो आपने शायद नोटिस भी किया होगा मैं जिस तरीके से फोटोग्राफी कर रही हूँ, तो मतलब फ्रेमिंग के जरिए इस चीज को कैसे देखना है, कंपोज कैसे करना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यही मैं सीख रही हूँ, यही है मेरा परिचय अभी के लिए। तो कुछ लोग मुझे जानते हैं, सड़क का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ रोड। WSF is not a place to declare outcome officially, right? So WSF is the place, open space. So different people are coming and doing activities, and they are going to deliver square of statement from their activities. So let's hope there will be beautiful and strong and critical square of statements may not come. And tomorrow, WSF, the organizing committee, is creating space for the delivery of square of statement from different themes, right? So now, from our side, regarding environmental issues, and since 3 days, we did a session called Climate Justice, Rivers and Society. And but at the same time also related to this topic, there were various activities, especially regarding climate justice and the global warming.
So film screening, like you also did documentary screening, and the photo exhibition. There were some photo exhibition, and there were art workshop and exhibition, and there were various uh, systematic kind of session also with the panels, and there were some session without panels, like a round sitting, sharing, and the discussion, right? To responding climate justice issue or climate issue or environment issue, it's really crucial how we understand also. So how it links with society and the global warming, the climate justice issue. So now climate justice issue became one of the major global agenda, but at the same time, how we connect with the local issues, local rivers. Right? There are various rivers. Let's say between Nepal and India, we have around 6,000 rivers, big rivers and small rivers. And within India, there are lots of rivers, right? So how we are enjoying the rivers, how we are facing the problem with rivers, and how we are responding the problems and the beauty of the river, that which need to come out. And I hope there will be some kind of a collaboration to understand each other's rivers life, and each other's sorrow, each other's pain, to go way forward, right? Let's say in Nepali context, we are not very much active to respond river issues right now. But in India, there are lots of initiation is going on, social movement is going on regarding river, regarding barrage, regarding big dams. Right? But if we compare, then our situation is little weak, right? If we don't compare between Nepal and India, or if you go beyond the borders, then various people are active, right? So that activism need to come together, right? From Indonesia or from Thailand or from Africa, from Maldives, from Bangladesh, that how we can connect. That is one, I think, which where we have to work. And at the same time also, whatever mistaken we did, and we should not repeat those all mistakes, right? In the name of managing rivers, right? That is another point where we have to be serious and how we can do what we can do. And the third is, again, we have to live, right? We have to survive. Then what are the ways, the healthy ways to survive? So we are talking about the jaibik kheti, organic farming. So how that is going to happen? We know it's not going to happen, it's not going to change in a day, right? It's a long journey. So that the healthy life, happy life, what does that mean, and how we can collaborate? That is what I found important. अभी नेपाल का नदियों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसका स्थिति कैसा है? जैसे कि कोसी गंडकी लेकर, कोसी लेकर, गंडकी लेकर, ऐसे कोई छोटा ब्रीफ में आप हाँ, तो ऐसा है, तो अभी मैंने पहले भी जो बोला था ना कि कुछ साल पहले हम लोग बहुत बातचीत करते थे, नेपाल के अंदर भी, नेपाल और इंडिया को लेकर भी। तो बाद में नेपाल का जो पॉलिटिकल जो इश्यूज है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो राजनीतिक मुद्दा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने की वजह से शायद एक वजह ये हो सकता है कि हम लोग इतना जितना हमको बहस संवाद करना था ज़मीन में, वो हम लोग नहीं कर पाए। तो अभी जो ये तीन तीन जो सत्र हुआ है वर्ल्ड सोशल फोरम में, और इससे पहले जो सत्र हुआ था इंडिया सोशल फोरम पटना में, तो एक अच्छी शुरुआत हुई कि फिर हम जुड़ गए हैं। तो अब मुझे लगता है हम थोड़ा और सक्रियता की ढंग से काम कर पाएंगे। अब कोशी की तरफ जो साथी लोग थोड़ा कुछ काम कर रहे हैं, और बाकी कर्णाली की तरफ थोड़ा कुछ काम हो रहा है, और काली गंडकी में थोड़ा कुछ काम हो रहा है, तो और भी छोटी छोटी जगह पे काम हो रहा है, तो समाज की तरफ से।
अब ये हुआ ना, नेपाल में जो राजनीतिक परिवर्तन आया है, तो अभी जो नेपाल का राजनीतिक परिवर्तन है, हम लोगों ने राजतंत्र को फेंक दिया, हम लोगों ने हिंदू देश को फेंक दिया, तो अभी नेपाल है धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक संघीय देश। तो ये धर्मनिरपेक्ष देश में हमको कैसे जीना है, और नदी और प्रकृति को भी मात्र धर्म की प्रयोग को लेकर नहीं देखना है। धर्म का और संस्कार का जो प्रकृति के साथ जो संबंध है, उसके साथ साथ और भी नदी और प्रकृति के साथ संबंध है, उसको भी हमको कैसे समझना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है मुझे लगता है। और फिर दूसरा ये है कि विकास के नाम में जो बड़ी बड़ी बांध बनाना, ये सबको लगता है कि बांध बनाने से नदी व्यवस्थित हो जाएगा, तो समाज व्यवस्थित हो जाएगा। तो ये भी एक गलत जो धारणा है वो भी फैल रहा है। तो इसको लेकर भी हमको काम करना है। बड़ी बड़ी बांध बनाने से नदी का व्यवस्थापन नहीं होगा, ये नदी का मतलब अव्यवस्थापन है, नदी के विरुद्ध में हम काम कर रहे हैं। तो अभी अभी एक समाचार आया है, और हम लोग उस जगह पे गए भी थे, शायद 2 हफ्ता या 3 हफ्ता पहले समाचार आया है कि काठमांडू के पास में ही, मतलब ज़्यादा दूरी में नहीं है, मतलब काठमांडू के केंद्र से 20-30 किलोमीटर के आसपास में एक बहुत बड़ा बांध बनने वाला है, नागमती बांध। तो वो बांध इसलिए बना रहे हैं, काठमांडू के जो लोग उपत्यका के बीच में वैली के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए मतलब अच्छा सा खाने का पानी व्यवस्थापन करना है। तो बांध बनाते समय उन लोगों ने ये तय किया है 80,000 पेड़ को काटना है। तो 80,000 पेड़ में 10,000 पेड़ बड़ी वाला पेड़ है, और 70,000 पेड़ छोटी वाली है। तो आयोजना का जो प्रमुख है सरकार की तरफ से, इन्होंने कहा कि 80,000 पेड़ काटने से समाज में कोई, प्रकृति में कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। तो जो गलत बात इन्होंने कहा है, अब हमको, हमारे पास ये चुनौती है उस जगह पे जाकर लोगों के बीच में बातचीत करना है कि ये 80,000 पेड़ काटने से प्रकृति को, समाज को असर करता है या नहीं। एक तरफ हम क्लाइमेट जस्टिस को ध्यान में रखकर पेड़ लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पेड़ को नहीं काटना है, लेकिन साथ साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि हमको पीने की पानी चाहिए, और वो व्यवस्थापन करने के लिए 80,000 पेड़ को काट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक जो है ना, एक द्वंद्व, एक कॉन्ट्रडिक्शन, तो इसको समझना भी जरूरी है। तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन को, द्वंद्व को कैसे संबोधन करना है, उसको ध्यान में रखकर भी हमको काम करना होगा। Being a part of this organizing committee of WSF, how you yourself see the question of funded NGO? And this is very important question and the aspect of the source of resources. Source of resources. So WSF Charter and Principle says there won't be any funding from those companies, those institutions who are promoting neoliberalism principles. So it's against some companies and some countries who are promoting neoliberalism policy, right? So now the point is, after the journey of 2001 till 2024, where we are, when we talk about the World Social Forum process, that's very important. I don't know how the people are trying to make this as an important aspect and the important questions to criticize WSF process, and also not criticizing, also the contribution. So now the point is, do we need WSF or not also? That is also very important. The way we are putting our energy and the money and our time, our brain, right? Then what is the impact? What is the use of WSF? That is also we have to rethink. And for this World Social Forum 2024, there are various support by the various NGOs.
and INGOs also. But at the same time also, people are supporting themselves to come here, Kathmandu, and to make activities. So that is the kind of individual support, individual contribution, and collective contribution from the ground. So like you came from India, it's the contribution from the community, from the peoples, right? So if I'm going to be honest, from my observation, being a National Organizing Committee member, I observe around 80-85% NGOs are funded NGOs who are in National Organizing Committee, and very few, not 85%, more, maybe almost 99% NGOs are funded NGO for various projects, and very few initiations are here and got opportunity to register their activities and register their organization as people's organization and as collective initiation without payment of the fee. So very little. Maybe the organizing committee able to make a list of those names who are the people's organization and the collective able to come and do their activities. So this is very much clear, right? So WSF processes became a kind of a NGOs funded activities, and it should not be. So it's very important to have critical suggestion contribution as organizer of the WSF and the participant of the WSF who came here along from thousand and thousand kilometers far, right? So let's do that.